Sia, how are you? Yes, sir. Good evening, It's sir. I'm good. How good are evening, you? Sia. How are you? I'm fine. आप बताओ कैसे हो? सर बढ़िया आप गेस करो मैं कहाँ बैठी हूँ कहाँ बैठे हो आप? मुझे आई एम लग इन द कॉलेज कैंपस कॉलेज कैंपस. यस सर सो डेडिकेटेड कॉलेज कैंपस में होके पॉडकास्ट दे रहे हो, क्या बात है. सर एक्चुअली आई हैव मेड अ हैबिट ऑफ माई सेल्फ कि एवरी इवनिंग फ्रॉम 4:30 to 8:30 आई एम इन द लाइब्रेरी स्टडीइंग नाइस. सो आई थॉट घर जाऊंगी वापस आऊंगी इससे अच्छा यहीं पे दे देती हूँ गुड गुड. आई हैव टेकन मेनी पॉडकास्ट वेयर स्टूडेंट वेयर इन द कॉलेज कैंपस या लाइब्रेरी या तो कैंटीन में बैठ के हाँ पॉडकास्ट दे. जी So I can understand because of the, sometime entire schedule is very hectic or sometime Yeah. time management wise. But it is good. ठीक है. How's the life in ILS? Sir, I don't know how to sum it up right now. Actually, in the next 3 days, it's going to be 1 month Oh, since I'm here. And mhm. the only one word that I have is thrilling. Really. Because I think as far as I remember, I've always wanted to do law. मेरा passion ही law है. And now to be in these walls where so many great minds have graduated from, to learn from such amazing faculty and to finally be able to learn and study law is something that I've always wanted to do. So no matter how hectic the schedule is, it's been great so far, sir. Nice, nice. All right, so we'll be having detailed conversation about life in ILS campus and how the thing is going on. But before that, Shreya, about yourself. Academic background क्या था? Which college, state, city you belong to? And law CET के प्रिपरेशन बाद में बात करते हैं, बट उसके पहले ILS लॉ कॉलेज में जाना है, ये कब सोचा? लॉ करना है, ये कब सोचा? या Hanji. So first of all, about me, I just turned 21 a few days ago, and I am a graduate from Delhi University. I graduated with honors in English from Sri Venkateshwara College. Usse pehle, I have done my schooling from the FO school, from kindergarten right up till 12th grade. I am born and brought up in Delhi, and now I'm in Pune. So thoda cultural shift hai, still adapting to that. It's an added, challenge हाँ. sometimes. So yeah, that's about me. And law, actually, मैंने decide किया somewhere after my 10th boards. Because उस time पे, I know ये बहुत petty sound करेगा, but there used to be this show I used to watch, Suits. ओह, वहाँ माय से फेवरेट वन. इधर हाँ जी थंबनेल लगा सर देना भाई सूट का, ठीक है. सूट्स, तो ओके. वहां से एक्चुअली थोड़ा इंस्पिरेशन आया आई नो कि एक्चुअली में वैसा कुछ भी नहीं होता है हम्म. फिक्शनल रियल एंड रियल लाइफ बहुत अलग होती है बट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वी हियर अ लॉट अबाउट केसेस इतने हाँ. सारे केसेस होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट द फैक्ट दैट देयर आर स्टोरीज एंड पीपल बिहाइंड ईच केस एंड दोज केसेस दोज स्टोरीज form what we are today. They form the rules and regulations of our country, of our people around the world, of countries around the world. So that was very fascinating to me. And शुरू से ही मेरा रीडिंग एंड स्पीकिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा इवन राइटिंग एज वेल सो मैं बस as soon as I started watching that show I was gripped. I was like अच्छा ऐसा भी कुछ होता है ओके. ऐसे भी you can change lives because हम when we think about the fact that okay I want to change lives बहुत डेफिनेट आंसर्स होते हैं या तो आप चले जाओ एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ आप आईएएस आई वो सब कर लो आईपीएस बन जाओ या आप डॉक्टर बन जाओ आप लोगों की हेल्प हम्म. करो हम्म. बट एक बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि अंडरडॉग काइंड ऑफ प्रोफेशन होता है लॉ आई हम्म. फील कि हम्म. इवन दो it changes lives but इतना ज्यादा it is not in the limelight as these professions are. हम्म. So me wanting to make a contribution to the betterment of my society, make a contribution to a betterment of my world, and to also bring forth my love for speaking, of reading, of analyzing, of meeting more people and helping more people, I felt like law was something that I definitely wanted to do.
over the course of years, I kept reading, I kept watching more movies, I kept watching more series, and that's when I decided कि law करना है. 12th के बाद I actually gave my CLAT as well, हाँ and I got a miserable rank. हाँ लेट्स मेरी नॉट डिस्कस रैंक अबाउट इट। ऐसी कि फाइनली वी आर इन आईएलएस, तो अब सही है yes. चीजें। कैंपस इज वेरी ग्रीन, आई हैड विजिटेड आईएलएस, और आई मतलब आई लव द कैंपस, कैंपस इज वेरी गुड। Yes, sir, definitely. दिल्ली टू मुंबई कैसा, कितना चेंज खुद को करना पड़ा है, या कितनी चीजें Mm, कंफर्टेबल है? सर सबसे बड़ा फैक्टर तो आई थिंक फॉर मी पर्सनली वाज लीविंग होम, बिकॉज मैं आज से पहले कभी घर से दूर नहीं रही। तो वो हम्म कंफर्ट जोन छोड़ना, अपनी फैमिली को छोड़ना, वो बहुत ही, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। मी एज अ पर्सन आई एम वेरी, मैं बहुत एडजस्टिंग नेचर की हूँ। मेरे को बस अपने काम से काम रखना है। एज लॉन्ग एज यू नो आई एम डूइंग दैट, आई एम फाइन। इट्स जस्ट दैट वो 24 hours you're in the house, you have my, I'm just fighting with my sister, I'm complaining to my mom, I'm talking to my dad, my grandparents are there. अपना एक रूटीन था, तो उस सब को छोड़ के आना आई थिंक वाज द बिगेस्ट टास्क। एंड पुणे आके वो डिफिकल्टी हुई, बट कॉलेज कीप्स मी रियली ऑक्यूपाइड। तो मेरे को आधे टाइम तो टाइम ही नहीं मिलता सैड फील कराने का अपने आप को। सुबह ओके 7:15 I have my first lecture. I wake up at 5:30. I am done with my college by 12:30. I go back, I have my lunch, I rest for a bit, and I'm back in the library at 4:30, and then I go back, कभी 8:30 कभी 9 बज जाते 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 9 बजे तक लाइब्रेरी खुली होती है। एंड देन घर जाके थोड़ा डिनर करा, थोड़ा चिल करा, सोने का टाइम हो जाता है वापस। नाइस। And apart from that, पुणे की one thing which I love, it's, you know, compared to Delhi, Delhi जैसी मुझे लगता है तो कहीं बात ही नहीं है, because I've always lived there. करेक्ट। तो पुणे आके वो थोड़ा स्लो सिटी वाला वाइब अच्छा लग रहा है। वेदर इज अमेजिंग हियर, ठंडा ही रहता है सारा टाइम, गर्मी नहीं पड़ती यहाँ पे। ऐसा तो मुझे नहीं आया, मैं इतने बार पुणे आया बिकॉज देयर इज अ पुणे ऑफिस कमिंग मेन्यूवर का, डेक्कन के हाँ पास। जी, कंग्रेचुलेशंस, मैं थैंक डेक्कन यू में ही हूँ थैंक। सर अभी। अच्छा डेक्कन में ही हो? हाँ 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 डेक्कन में जी। ही है, आईएलएस भी आजू बाजू ही है। तो अभी हम्म। मैं तो मुझे तो गर्मी लगी थी भाई वहाँ। बट या मुंबई का टेम्परेचर ठीक है। पुणे में थोड़ा ठंडी हम्म। ज्यादा पड़ती है, बारिश भी ज्यादा होती है। हम्म। मुंबई में सब ओके ओके होता है, मालूम नहीं पड़ता कब ठंडी आई गई। बट ठीक है, दिल्ली के कंपेयर में नाउ पुणे इज देयर, तो अच्छा है पुणे। हम्म। कैंपस के अंदर अभी तक का एक रूटीन है कि मॉर्निंग में कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद हम्म। आफ्टरनून में कॉलेज से आ रहे हो, फिर हैविंग योर लंच, फिर लाइब्रेरी आ रहे हो। रूटीन बहुत हेक्टिक है या इट इज मैनेजेबल, कैसा है? फिर इट इज़ वेरी मैनेजेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बट देर आर माई क्लासमेट्स हु लव टू हैव फन। ऐसा नहीं है, हाँ मतलब देर इज FC रोड यहाँ पे विच इज़ अ ग्रेट हैंग आउट स्पॉट। इट्स लाइक पूरा स्ट्रीट मार्केट है, हाँ हाँ यू हाँ। कैन गो अबाउट, दैट्स वेरी गुड। एंड मतलब whenever I आई come to फील, FC, whenever I come to Pune, I come to FC Road, Rupali, Wadeshwar. I have हाँ। my breakfast there, and हाँ जी। मतलब amazing food है, South Indian. यस, अग्रीड। सो इतना हेक्टिक नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्लासेस सुबह ही खत्म हो जाती हैं, सो यू टेक्निकली हैव द होल डे टू डू वट एवर यू वांट। हम्म। फॉर मी इट्स अ पर्सनल चॉइस, बिकॉज मुझे पता है मुझे भी घर जाना है, मुझे छुट्टियां लेनी है, तो पहले पढ़ के रखो सब कुछ। ओके, इट्स नाइस। शेड बैच साइज कितनी है, और किस वैरायटी के अंदर, कहाँ से, कौन कौन से स्टेट सिटी से लोग हैं? Sir, for the 3-year LLB course, we have 3 divisions, हम्म। and every division has about 60 kids, 60, 61, 62. ओके। So that we have 3 divisions like that, and apart from that, there is the 5-year LLB also. Right now, उनकी classes चल रही हैं, in fact, and there is the LLM course also which goes on. So batch size is decent, very manageable also. Classrooms are big, and professors are really good, so they handle the lecture room pretty well. हम्म And apart from that, या मतलब बस कभी कभी ये लगता है कि बहुत हेक्टिक हो रहा है ड्यूरिंग क्लासेस, द रीजन बीइंग इज बिकॉज देयर सो मच इन्फॉर्मेशन, हम्म हम्म
एंड आई थिंक मे बी आई एम जस्ट स्टार्टिंग, तो वो थोड़ा ज़्यादा मुझे अभी कोप अप होने में, हैबिट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा. नाउ इट्स गेटिंग बेटर ऑफ कोर्स, but otherwise it's great. Like, and as far as my classmates are concerned, there is of course majority is from Maharashtra. पुणे से नहीं तो आसपास से हैं, मुंबई से हैं, नासिक से हैं, औरंगाबाद से हैं. ज़्यादा वो ही पॉपुलेशन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज, यस, देर आर लाइक 10-15% kids in each class from North India. ओके, नॉर्थ इंडिया, उत्तर हाँ जी. प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ जी. दिल्ली, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब. हाँ पंजाब, जी. एंड साउथ से कर्नाटक, बैंगलोर, साउथ से केरला. मेरा पर्सनली एटलीस्ट मेरे सेक्शन में या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनमें तो इंट्रैक्शन नहीं हुआ है अभी. सो आई एम नॉट वेरी अवेयर, बट आई नो कि सीनियर्स में हैं, साउथ इंडिया हम्म. रिप्रेजेंटेशन है. कितने लोग मेन्यूअर से है अंदर? बैचमेट होंगे ना बहुत सारे. सर बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे. सारे हैं. हाँ जी. हाँ, और अच्छा. मेरे को नाम तो ऐसे ढंग से याद नहीं है, बट मेरे को द फर्स्ट डे आई केम हियर तो किसी ने बोला, अरे वी वेंट टू कोचिंग इंस्टीट्यूट टुगेदर, लाइक 2 friends आर कमिंग. हम लाइक कहाँ से? कहते हैं यूनिवर्स से करा. हम लाइक वाओ. नाइस, नाइस. सो उनके भी पॉडकास्ट रखते हैं. Ask them to give the podcast, their experience, डेफिनेटली. you know. यस, आई वुड And लव whenever टू I'm आस्क coming देम. to Pune, so I'll come to the ILS. We'll do the podcast there as well. ओके सर, डन. ऑफ कोर्स, लुकिंग फॉरवर्ड. अब तो आपसे मिलना होता रहेगा सिंस यू हैव द पुणे ब्रांच ओपनिंग अप एज वेल. हाँ, पुणे आ रहा है. पुणे का वेरी सुन वी आर कमिंग नासिक ऑल्सो. तो वहां ओह के भी वाओ. लोगों के साथ पॉडकास्ट. बट हाँ, आईएलएस का अपना ही वाइब अलग है. Hmm. Agreed. The campus is very big and very beautiful. Like, I can't stop emphasizing that enough. ऐसा लगता है sitting in the lap of nature and studying. जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम रविंद्र. है ना उनका. हाँ जी. इट इज अ कंप्लीट रेसिडेंशियल प्रोग्राम. तो हम्म. दैट फीलिंग तो आ ही जाती है. हम्म. एंड अच्छा भी है, नो डाउट. काफी बड़ा है, हम्म. कैंटीन अंदर है. और यू हैव अ Yes. गुड लाइब्रेरी ऑल्सो. Yeah, yes, sir, definitely. There's like a lot of, actually, the library has an amazing collection. I feel like even if you don't want to study and you just want to explore the library, there is this rare book section which has like even the handwritten constitution, ओ. and there's like some really exclusive books there. So it's for a, someone who wants to learn about the law, is very excited to learn, very, passionate about it, and these things matter to them. It's a treasure for them. It's a treasure haven. नाइस. You met with the seniors also? A few of them, not a lot, because हाँ. जैसे ही हम आए उनकी ब्रेक हो गई. ओके. Yeah. So abhi our seniors are on their preparatory leave because we have हाँ. exams in December. So, and they have their exams in late November. ओके. So that's why ज़्यादा interaction नहीं हुआ. But हाँ. Friday and Saturday we had a great orientation. हम्म. Induction thi, and it was one of the most amazing sessions that I think personally I have ever witnessed. There were speakers from different companies, HR hire the HR managers who hire law graduates, and there were like so many well-known ILS graduates who हम्म. came back, who were at top positions in big firms. So हम्म. to learn about that, and I think my favorite part about the induction was learning that there is a best student award which ILS gives out. And like, I have to add that to my manifestation board. Nice, nice. So, you had a word with the any committee member who are related to the placements. What is the placement Uh, stats so far? hmm. Any? So as far as I know right now is that 60 to 70% of the students definitely get placed in good firms. Like, they have about a 23, I think the highest package that went for a fresh graduate was 23 lakhs per annum. Okay. And most of the companies that hire them actually are people themselves who graduated from ILS. And I can see that here, their alumni presence बहुत strong है. Even our faculty, I think 60 to 70% of the faculty is ILS graduates, be it visiting faculty or permanent faculty. Mm-hmm. And then even the guest lectures they have, or like the companies that are placing these students, they are also, some way or the other
associated with ILS. They graduated from ILS years and years back. So that is one thing I observed. And also, one thing that we have been mentioned by the placement cell is that we will get you placements, but you need to build yourself. So जब तक आपके पास अच्छी internships नहीं होंगी, तो even we can't help you. Even companies won't come forward to like hire you. So that is one thing that I got to know. Baki, of course, I'm learning eventually, slowly, getting to know, learning the lie of the land, lay of the land. 23 lakh is the highest. What is the average approx? Approx was, I think, average they did not mention, but they mentioned the lowest, which was 9 lakhs per annum. Its lowest was 9. This is 9. Yes. Good package Yeah. they are giving. Yeah. Internship के लिए they help or you have to hunt outside? There is both facilities are there. So what we have been suggested is that the placements will also helps with the internships. So you can be in touch with them and there's that. But also if you want to, if you don't think you are getting very good internships at the moment, there is also, the student run legal aid center. जो college के अंदर भी है and there's an outside affiliation also. Okay. So that is one place you can garner a lot of experience. And apart from that, the college has a lot of cells, which, अगर आपको internship नहीं मिल रही है, for most of cases, they have suggested कि because फर्स्ट सेमेस्टर LLB स्टूडेंट्स को ज़्यादा लोग इंटर्नशिप नहीं देते हैं. सेकेंड सेमेस्टर में फिर भी देने शुरू हो जाते हैं, बट देयर स्टिल नो गारंटी. So they have suggested to continuously work on ourselves by joining different cells. So there's mood courting, there's debating, there's animal and environmental rights society. So far, so that's all we know. But Nice. yeah. Let's shift our preparation to the CET. How you got to know about maneuver और CET की preparation के बारे में कुछ Sir, insight? Yeah. I actually, as I mentioned before, I was somewhere in like 26, 27,000 rank when I gave the CLAT because I was the COVID batch. So my 12th exam never really happened. And so मेरी CLAT की preparation भी वैसी ही थी कि वो हुई ना हुई एक बराबर थी. So as soon as I got into college, I decided कि no, I have 3 years and abhi se I'll start preparing. So the first thing that I searched was law after graduation. And I think the first video that popped up was a maneuver video about the 3L LLB. And that is how I found out about your YouTube channel. And I, मैं बैठ गई बस लेके सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस देखनी शुरू कर दी एक एक करके. फिर पता लगा अच्छा ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, ऐसी तैयारी करनी है, वैसी तैयारी करनी है. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. एंड it was honestly not so difficult because मैंने बहुत जल्दी preparation शुरू कर दी थी. even if not rigorous preparation, थोड़ा थोड़ा prep करना शुरू कर दिया था. And since I was already pursuing a bachelor's degree in English section तो मेरे लिए it was not an issue at all. तो थोड़ा थोड़ा I started working on my weak points. Like I remember logical reasoning तो मेरे से हो ही नहीं रहा था. वो मेरे से एंड तक नहीं हो रहा था. बट जैसे ही मैंने मॉक्स लिए एंड मैंने मॉक्स के क्वेश्चंस करने शुरू किए, आई नो दैट जब हमारी आंसर की आई, मतलब वेर वी कुड चेक कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, मेरे सिर्फ एक गलत था लॉजिकल रीजनिंग में. मैं बहुत खुश थी. फ्रॉम गेटिंग लाइक ओनली 7-10 राइट टू गेटिंग जस्ट 1 रॉन्ग in the stipulated time. So yeah, so I started preparing through the videos, the live sessions, Azad sir, आपके videos, सबके videos ही देख के मैंने पढ़ाई करी है. I completely self-study and maneuver mocks. That was my entire strategy. Nice. You fall in category or how it was? No, So I was OMS general, OMS no general. reservation, no category. हाँ जी. Okay. Anyway, outside Maharashtra there is no reservation. Yeah. Okay. I think a lot more we have discussed, but last question, Sia, for the viewers, those who are watching this podcast,
those who want to get into the ILS Pune or maybe the JLC, if they Yeah, come to ILS, you will be their senior now. definitely. I'd be happy to help. Yes. So what tips or the session you want to give them in terms of the CET preparation? Yeah. I think the very first thing is be confident in yourself. Hmm. Because I have noticed one thing, when I gave the CLAT, it wasn't that I was dumb, Hmm. or it wasn't that I didn't know how to study. It was that I wasn't confident in myself. I had zero belief that I could do this. Hmm. So first was I believed in myself, ki, you know what, I am going to do this. And one thing that personally helped me a lot was manifestation. I used to manifest. मैं imagine करती थी. It's used to start with, um, I'm gonna get into this college. I'm gonna study law. And sir, I did a podcast with Azad sir, the Toppers podcast. Oh, wow. यस एंड उसमें मैंने सेम चीज़ बोली थी, आज मैं आपको दोबारा बोलने वाली हूँ वो, कि आपके जो वीडियोज़ आते थे ना टॉपर्स पॉडकास्ट वाली, मैं सोचती थी एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ाई मेरे से हो नहीं रही थी बिकॉज़ आई वाज़ गेटिंग कोल्ड फीट। सो आई वाज़ जस्ट सिटिंग एंड आई वाज़ इमेजिनिंग कि सर के साथ एक दिन ऐसे मीटिंग पे बैठ के बताऊँगी मैं मैं भी एक दिन कि पॉडकास्ट दूंगी। हाँ जी, मैं भी दूँगी। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। नाइस। एंड बी कंसिस्टेंट, डू नॉट गिव अप। चाहे थोड़ा थोड़ा ही करो रोज, बट करो, मेक अ प्लान, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गिव एज मेनी मॉक्स एज यू पॉसिबली कैन। मैन्यूवर के मॉक्स से बेस्ट मॉक्स मैंने देखे नहीं है। उसमें वंस यू स्कोर डिसेंट इन दैट, आप एग्जाम में यू गोना किल इट। दैट Hmm. वाज व्हाट एक्चुअली वाज माय फाइनल बूस्टर कि आई कैन डू दिस। कि सर ने बोला था हमारे मार्क्स 2 लेवल ऊपर ही होते हैं, तो इससे तो मैंने 100 क्रॉस कर लिया ना, अब मेरा कुछ तो हो ही जाएगा। नाइस। टॉप 3 कॉलेजेस तो मिल ही जाएंगे। एंड मिल गए, सो इट फाइनली वी आर इन स्टार्टेड आईएलएस। फाइनली, हाँ जी। And yeah, don't lose hope, be consistent. Yeah, I think that's all I have to say. It's not so difficult if you're consistent, if you're working hard. Give yourself plenty amount of time. ये नहीं कि 1 महीना रह गया तो आप पढ़ने बैठ रहे हैं। Hmm. I think I have been preparing properly for 2 years for this exam. चाहे मैं रोज 2 घंटे नहीं देती थी, some Hmm. day 30 minutes, some day 1 hour. I used to do sections like, okay, so my GK is very weak, so I'll start with GK. I'll do Hmm. static GK, जैसे आजाद सर ने भी आई थिंक लास्ट के जो एग्जाम के कुछ फ्यू वीडियोस थे एग्जाम के जस्ट पहले, उन्होंने स्पेशली बोला था कि Hmm. स्टैटिक जीके बहुत आती है, और उन्होंने क्वेश्चंस भी कराए थे, उसमें से करेक्ट। काफी क्वेश्चंस है। Hmm. तो मैंने अपने वहां से पॉइंट्स पे काम करना शुरू किया। मॉक्स में जो जो मेरे वीक पॉइंट्स होते थे मैं Hmm. उन पे वर्क करती थी, एंड आई स्टार्टेड बाय जो क्वेश्चंस गलत होते थे आई यूज्ड टू रीअटेम्प्ट दोस। मैं Hmm. खुद सॉल्व करती थी जब तक आंसर नहीं आ जाता था। Okay. So I think you need to do a little SWOT analysis for yourself, ki where you are lacking, and you have to work on that. And I think you're good to go. That's all, guys, in this podcast. Lot more thing explained by Sia. And if you are targeting for ILS, surely you can crack it. Be consistent, do hard work, practice करो, mock लिखो, analysis करो, and be confident about yourself. निकाल लोगे आप exam आराम से. And when you go to the ILS Pune, Shia will be there, your senior. You can follow Definitely. Shia on LinkedIn. She will help you. ठीक है. And चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को शेयर करो so that other students will also be benefit from this podcast. And that's all in this video. Shia, once again, congratulations for ILS Pune and all the very best for your career. Thank you so much, sir. And big thank you to Maneuver and the family for constantly helping me, be it CAP support or be it the videos or the mocks. I feel like the reason I'm here is because of your team. Nice. Our pleasure. Welcome. And that's all. Okay. Thank you, sir. Whenever we are coming Pune, we'll definitely one day visit to the ILS also. I'll meet the entire batch also. We'll do some healthy podcast over there. We'll do some healthy Yes. podcast. Okay. Chalo. Bye bye. Take care. Yeah. Thank you, sir. You're welcome. Bye.